Hello everyone, this is Ashmi. Welcome to the channel. So I hope all of you are doing well, doing good preparation for your examination, and also you have filled your form. And if not filled, then go and fill, complete your this responsibility so the at last moment we will be uh, tension free, because sometimes it is difficult to fill the form at the end of the moment. So in this video, I'm going to tell you three important changes, तीन महत्वपूर्ण बदलाव जो कि एनटी यूजीसी नेट में किए गए हैं. And if you are the beginner for this examination, if you are already prepared or have given this exam many times, so you must watch this video because we are going to discuss the important changes that has been done here. पहले एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जैसा कि हमसे पहले कहा जा रहा था कि देयर विल बी चेंज इनटू द सिलेबस, बट देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस. तो ये जो चेंजेस जिनकी हम बात करने वाले हैं, इट इज नॉट अबाउट द सिलेबस चेंज, बिकॉज अभी जो लिंक इन्होंने इन द ब्राउजर प्रोवाइड करवाई है, इन दैट देयर इज नो चेंज इनटू द सिलेबस. सिलेबस आपका सेम है, same content, especially for the computer science we have the same syllabus, so you have to prepare the same syllabus for the examination. So yes, you can continue with the same syllabus. So let's start with the first major change जो यहाँ पर किया गया है. It is about your examination mode of examination. Before this, the mode of examination was the CBT, that is computer based test procedure. जहाँ पर आपका जो पेपर होता था, it is on the computer and कंप्यूटर बेस्ड. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेपर शीट प्रोवाइड किया जाता था, एंड यू वर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑन द पेपर शीट, बट आंसर आप किस पर मार्क करते थे? ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, बट हियर नाउ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पेपर एंड पेन based mode is here. So you will get paper in a booklet. ठीक है, you will get a booklet and in that you have to solve the question. तो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छी बात है, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि जब आप बुक स्लेट पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू कैन रिव्यू ऑल द क्वेश्चन. आप एक बार में ही सारे क्वेश्चन रिव्यू कर सकते हैं और जो इजी क्वेश्चन है उनको आंसर कर सकते हैं. सेकंड थिंग कि आपको जो क्वेश्चन है उसको आप साइड पोर्शन में सॉल्व कर सकते हैं, इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं. आपको इसके लिए पेपर एंड स्क्रीन के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत नहीं होगी. जो आपका डायग्राम है, इट इज प्रॉपरली विजिबल टू यू. अदरवाइज जो स्क्रीन में कई बार ये होता है कि डायग्राम का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, स्क्रॉलिंग टेक्स द टाइम. जब आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करेंगे, तो उस केस में भी जो स्क्रॉलिंग में आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, दैट यू कैन सेव. सेकेंड थिंग इज दैट कि आप यहाँ पर क्वेश्चंस को अंडरलाइन भी कर सकते हैं, एंड आप जो समरी डेटा है, लाइक गिवन दैट है ना, जो समरी डेटा है उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं. सिंपली अंडरलाइन कर लीजिए, नो नीड टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग. तो ये काफी टाइम सेविंग होने वाला है, एंड इट आई एम हैप्पी फॉर यू कि नाउ वी हैव अगेन पेपर एंड पेन मोड इज बैक. नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सेम रखा गया है. अगेन 50 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1, 100 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 2, एंड वी हैव टू सॉल्व इट इन द 3 hours. ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 पेपर 2 का मोड होगा. क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी सेम है, लाइक एटलीस्ट 40% वी हैव टू स्कोर इन बोथ. बट रिमेंबर, मैं हमेशा जैसा बोलती हूँ कि सिर्फ 40% से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू बी इन मेरिट. आपको मेरिट में आना होगा. यू हैव टू स्कोर टू 65% टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 65 चाहिए, क्योंकि होता कैसे है कि 6% स्टूडेंट, ठीक है, those who are going to score more than 40%, out of those 6% they are eligible for the assistant professor and all, and out of that 1% student are eligible for the JRF, है ना. तो हमको इससे थोड़ा सा ऊपर क्राइटेरिया लाना होगा. दिस टाइम डेफिनेटली 6% से थोड़ा ज्यादा सिलेक्शन होगा, बिकॉज हियर वी हैव PhD eligibility is also there, we have third category is also added here. That is the next major change. So you can see कि in this next major change आपका जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, now we have the 3 category of the एग्जाम जहां हम अप्लाई कर सकते हैं. अवार्ड फॉर द JRF,
ठीक है, award for JRF and appointment as assistant professor, and you can also apply for the PhD admission. Definitely JRF तो उसी से relate होता था. Now candidate who is qualifying for appointment as assistant professor and admission, you will be eligible for assistant professor and admission to PhD. It was the last criteria, but you will not get any fellowship. ठीक है, and if you are going to qualify in the last category, you can only apply for the PhD exam. You cannot apply for the JRF, you cannot apply for the assistant professor. तो कोई बात नहीं, at least you can take the admission into the PhD and can pursue your career as an assistant professor. क्योंकि एक बात याद रखिए, ultimately whenever you are going to be as an assistant professor, you need these two things. First, you should be national eligibility टेस्ट क्वालिफाइड. ठीक है, आपको कभी ना कभी नेट क्वालिफाई करना ही होगा, और यू हैव टू do your PhD for the further promotion. Like अभी आप assistant professor बनते हैं, then you will become reader, you will become the professor and director and so on. So we have these two nuggets, हमको ये दोनों nuggets collect करना ही है. तो आप थर्ड कैटेगरी में भी यदि क्वालिफाई होते हैं, that is well and good thing. ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. Definitely the qualification criteria for the third category will be less than these of two. ठीक है, now देखिए, the candidate qualified under category 2 and 3, the marks obtained in the net will have the 70% of weightage, and 30% will be based on the performance in interview and viva. So we are getting 70% weightage यदि आप net या gate qualify कर लेते हैं. For PhD, the marks obtained in net by the candidate by category 2 and 3 will be valid for only 1 year. तो यदि आपने 1 year में अपना स्कोर कार्ड यूटिलाइज नहीं किया, then you have to reappear in the examination. ठीक है, reappear in the examination, and the result of net will be declared with percentile. So candidate can utilize the marks for the PhD, and how many candidate are going to qualify for PhD, it is decided by the committee. ठीक है, so this is the second major change. Now the third major change, it is about the eligibility criteria. ना, so already if you have 55% you can apply. If you have master degree, है ना, आपके पास यदि master degree है and in that you have scored 55%, you can apply for the NET exam. But if you have any undergraduation degree with 4 years, okay, if you have 4 years undergraduation degree with 75% mark, still you can apply for the PhD for the NET examination. Correct? So this is the major change that have included. And now see, if you are final year student, ठीक है, यदि आप final year student है, still you can apply for the NET examination, JRF examination. And remember, there is age limit for JRF, but no age limit for the NET assistant professor. ठीक है, there is no age limit for the assistant professor and PhD entrance examination. So you can apply for it. So yes, these are the three major changes that you should know. And here are the some programs that I am running for my student at free of cost. There is weekly free mock test series where we are I'm conducting subject wise weekly mock test, and we have practice session on computer science where we are solving most repeated MCQs. It is again free classes you will have on Monday, Wednesday and Friday at 11 a.m. So simply app download करिए and you can join this session on my app. It is not available on YouTube. App पर available है, recording भी available है, but app पर. ठीक है. So yes, we have these complete courses where I have provided the recorded session of theory, practice of topic wise PYQs, then NET previous year question, GATE previous year question, and rank booster mock test series is here. For now, you can avail. This offer is only running till 30th of April. So you can join this course in 1,999 rupees till 30th of April. So ये आपका limited time period offer है, आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. And now I am also going to start a rank booster mock test series where we will have 10 subject wise mock test alternate days पर होंगे, 10 full length mock test alternate days पर होंगे according to the latest pattern of the question or MCQs are there.
So yes, explanation you will have into the same mock test. So you can join this rank booster mock test series. It is going to be start from 1st of May. ऑलरेडी मैंने इसका टाइम टेबल शेयर किया हुआ है इनटू द टेलीग्राम चैनल, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. To get the notification of my classes, join this channel, that is Rashmi @Guru on the Telegram, correct? So this is the link for the Telegram, and you download my app to get the free classes from the Play Store, that is Rashmi @Guru. And yes, यदि आपको previous year question solve करना है, that is based on the subject wise, so subject wise या unit wise, unit 1 का 2023 से लेकर 2018 तक का PYQ, then unit 2, then unit 3, then unit 4 and so on. So it is available on Abhyas. It is available on Abhyas and it is available on YouTube. It is a playlist. Yeah, Abhyas is a playlist on YouTube. The channel name is Rashmi @Guru. So from that you can search the Abhyas series and can join this series. I will also give you the playlist link of playlist of this Abhyas series. तो आप इससे practice अपना continue रख सकते हैं. So this is about the updates. If you have any query, you can connect with me anytime. Sorry. Okay, you can connect with me anytime. Here is my mobile number. So on this mobile number आप मुझसे connect कर सकते हैं. For any query, please let me know. Thank you and all the very best for your examination.